नमस्कार। ये वीडियो समर्पित है उन अनसुने, अनदेखे जननायक और नायिकाओं के लिए जो अपनी जान जोखिम में डालकर कोविड-19 के विरुद्ध इस युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अस्पताल के वेस्ट हैंडलर्स की। हाउसकीपिंग स्टाफ की और सपोर्टिव स्टाफ की। इस वीडियो में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए यह स्टाफ अपने आप को और अपने मरीजों को कोविड-19 से सुरक्षित रख सकता है। धन्यवाद। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जिससे कि आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने मरीजों को सुरक्षित रख सकते हैं और इन्फेक्शन से बच सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है हाथ की सफाई। साबुन, पानी या अल्कोहल हैंड रब से हाथों को धोना, बार बार धोना। हाथों की सफाई के लिए सबसे बेहतर है हाथों को साबुन और पानी से धोना। हाथों को बार बार धोना। जब भी आपको अपने हाथों पर गंदगी दिखाई दे तो साबुन और पानी से हाथों को धोएं। यदि साबुन और पानी की सुविधा उपलब्ध ना हो तो आप अल्कोहल हैंड रब या हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहे, हाथ धोना है, बार बार धोना है और सही तरीके से धोना है। आइए जानते हैं हाथों को कब कब धोना है। पहला, किसी भी मरीज को छूने से पहले हाथ धोएं। दूसरा, किसी भी मरीज के ऊपर स्वच्छ एवं जीवाणु रहित प्रक्रिया शुरू करने से पहले हाथ धोएं। तीसरा, किसी भी मरीज के
तरल पदार्थ के संपर्क में आने के बाद हाथ धोएं। चौथा, किसी भी मरीज के परिवेश में आने वाली चीजें जैसे तकिया, बिस्तर, साइड रेलिंग इत्यादि को छूने के बाद हाथ धोएं। पांचवा, किसी भी मरीज को छूने के बाद हाथ धोएं। आइए जानते हैं हाथों को धोना कैसे है। हाथों को 40 से 60 सेकंड तक धोना है और हाथों को धोने के लिए 6 स्टेप्स का इस्तेमाल करना है। आइए जानते हैं हाथ धोने के वो 6 स्टेप्स क्या हैं। ध्यान रखें, हाथ धोने से पहले चूड़ी, अंगूठी और घड़ी अवश्य उतार दें। फिर हाथों को गीला करें और उपयुक्त मात्रा में साबुन ले लें। स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग। पहला, दोनों हाथों की उंगलियों और हथेलियों को परस्पर मलें। दूसरा, हाथों की उल्टी सतह पर उंगलियों के बीच में मलें। तीसरा, हाथों को इस तरह मलें। चौथा, अंगूठे को गोलाई में चारों तरफ से मलें। पांचवा, उंगलियों के सिरों को दूसरी हथेली पर गोलाई में मलें। छठा, कलाई को मलें, फिर पानी से धो लें। कोविड-19 के मरीजों की देखभाल करने वाले सभी स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षा के लिए पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि शरीर को ढकने के लिए गाउन का इस्तेमाल करें, ग्लव्स का इस्तेमाल करें। यहाँ ध्यान रहे कि जो स्वास्थ्य कर्मी कोविड-19 के मरीजों के सीधे संपर्क में आते हैं, जैसे कि नर्स या डॉक्टर, वो सर्जिकल ग्लव्स का इस्तेमाल करें, जबकि हाउसकीपिंग स्टाफ या वो जो बायोमेडिकल वेस्ट को हैंडल करने में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो हैवी ड्यूटी रबर ग्लव्स का इस्तेमाल करें। 3 लेयर वाले 3 लेयर्ड मेडिकल या सर्जिकल मास्क का प्रयोग सभी के लिए अनिवार्य है। जहां पर भी सिक्रीशंस या स्रावों के आंखों पर लगने की संभावना हो तो गॉगल्स का इस्तेमाल करें। आइसोलेशन वार्ड या आइसोलेशन रूम में जाते वक्त हेड कैप, सिर की टोपी और शू कवर का प्रयोग करें। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को पहनने का क्रम। सबसे पहले गाउन पहने, उसके पश्चात मास्क, उसके बाद यदि जरूरत हो तो गॉगल्स या हेड शील्ड का इस्तेमाल करें और सबसे अंत में ग्लव्स पहने। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को उतारने का क्रम। सबसे पहले ग्लव्स उतारें, उसके बाद गॉगल्स या फेस मास्क, उसके बाद गाउन और सबसे अंत में मास्क को उतारें। कुछ और ध्यान देने योग्य बातें हैं। अस्पताल में काम करते समय हाथों से अपने नाक, कान, मुंह और आंखों को ना छुएं।
ग्लव्स पहनने से पहले और ग्लव्स उतारने के बाद हाथों को साबुन और पानी से भली भांति धोएं। ग्लव्स के फट जाने पर या बहुत ज्यादा गंदा हो जाने पर उन्हें तुरंत बदल दें। मुंह पर ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग 4 से 6 घंटे से ज्यादा ना करें। यदि मास्क गीला हो जाए तो उसे तुरंत बदल दें। आइए अब जानते हैं कि अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड या आइसोलेशन रूम की सफाई कैसे करें। कोई भी गतिविधि करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपने खुद को सुरक्षित करने के लिए मास्क, ग्लव्स इत्यादि पहन लिए हैं। अस्पताल में झाड़ू का प्रयोग कभी ना करें। सिर्फ वेट मॉपिंग यानी गीले पोछे का इस्तेमाल करें। गीला पोछा लगाने के लिए 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड का प्रयोग करें। शिफ्ट में कम से कम एक बार वार्ड की सफाई अवश्य करें। इसके अतिरिक्त जब भी गंदगी हो या आवश्यकता महसूस हो तो वार्ड की सफाई करें। पोछा लगाने के बाद पहले पोछे को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में डुबोकर डिसइंफेक्ट करें। उसके बाद साबुन और पानी से धो दें। पोछे को धोने के बाद उल्टा कर सूखने के लिए रख दें। प्रयास करें कि शिफ्ट में कम से कम एक बार कुर्सी, मेज, अलमारी, आईवी स्टैंड और अन्य उपकरणों को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल से साफ किया गया है। 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या जिसे हम स्पिरिट स्वाब कहते हैं उससे एक्सरे व्यू बॉक्स, मॉनिटर जैसे उपकरणों को साफ किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि अस्पताल में इस्तेमाल होने वाले लिनन यानी कि चादर, तकिए के कवर, ड्रॉ शीट इत्यादि को धोना कैसे है। जहां तक हो सके लिनन को 60 से 90 डिग्री टेम्परेचर वाले पानी में वॉशिंग मशीन में धोया जाए। यदि वॉशिंग मशीन उपलब्ध नहीं है तो एक ड्रम में साबुन और गर्म पानी डालें और उसमें लिनन को डुबो के रख दें। उसके बाद एक लकड़ी से उनको हिलाएं। याद रहे कोई भी छींटा आपके शरीर पर ना पड़े। उसके बाद ड्रम को खाली कर दें और उसमें 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन में 30 मिनट तक लिनन को डुबो कर रखें और अंततः कपड़ों को साफ पानी में खंगालकर धूप में सूखने के लिए रख दें। याद रहे हर प्रक्रिया के बाद हाथ धोना बहुत जरूरी है। आइए अब बात करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट के प्रबंधन की यानी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले आइसोलेशन वार्ड या आइसोलेशन रूम में हमें बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अनुसार कलर कोडेड बिन्स यानी भिन्न भिन्न रंगों के डब्बों को रखना है। इन डब्बों में हम सिंगल की जगह डबल यानी कि दोहरे पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल करेंगे जिसे हम डबल लेयर्ड लाइनर्स कहते हैं। बायोमेडिकल बिन्स और लाइनर्स यानी डब्बों और थैलियों पर कोविड-19 का स्टिकर लगाना अनिवार्य है। कोविड-19 टेस्टिंग एवं इलाज के दौरान इकट्ठा हुए बायोमेडिकल वेस्ट का रिकॉर्ड अलग से रखना है। बिन्स, ट्रॉली इत्यादि को 1% हाइपोक्लोराइड से अंदर एवं बाहर से साफ करना है। सुनिश्चित करें कि जनरल वेस्ट और बायोमेडिकल वेस्ट के लिए अलग अलग कर्मचारी नियुक्त किए गए हों। इन बदलावों के अलावा पहले से उपस्थित बायोमेडिकल रूल्स का अनुसरण करें। कोविड-19 टेस्टिंग और इलाज के दौरान इकट्ठे किए गए बायोमेडिकल वेस्ट पर कोविड-19 वेस्ट का स्टिकर लगाना अनिवार्य है। इस कोविड-19 वेस्ट को एक अलग से बनाए हुए सुरक्षित कमरे में रखना है जब तक कि उसे हम कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी को नहीं दे देते। इन सब के अलावा खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए आप
सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, अर्थात दो व्यक्तियों के बीच में कम से कम 3 फीट या 1 मीटर की दूरी रखें। और अस्पताल से आने के बाद अपने कपड़ों को ब्लीचिंग पाउडर से डिसइंफेक्ट करें धोने से पहले। हमें विश्वास है कि कोविड-19 के इस संकटपूर्ण दौर में यह वीडियो आपके लिए और आपके मरीजों के लिए इन्फेक्शन से बचने में मददगार साबित होगा। कोविड-19 के सभी सेनानियों को शत
चरण पहला, हाथों की सफाई। अब हाथों को साफ करें। चरण दूसरा, जूतों के खोल पहने। साफ कुर्सी पर बैठें। अपनी ऊंचाई के अनुसार लंबाई एडजस्ट करते हुए घुटने के ठीक नीचे पट्टियां एक आसान गांठ में बांधें। ना ज्यादा
टाइट और ना ही ढीला, ताकि बाद में डॉफिंग के समय इसे खोलने में आसानी हो। चरण तीसरा, दस्तानों का पहला जोड़ा पहनना। अब दस्तानों का पहला सेट पहने, जो आपको हाथों में उचित बैठता हो। चरण चौथा, गाउन पहनना। पहनने से पहले देख लें कि गाउन कटा या फटा तो नहीं है। सबसे पहले कलाई के पास से अंदर के दस्तानों को ढकते हुए बाहों को अंदर डालें। अपने सहकर्मी की सहायता से पीठ को पूरा ढकते हुए गाउन को ठीक से बांध लें। अब अपने गले और कंधों के खुले हिस्से को बिना छिद्र वाले ओटी टॉवल से इस प्रकार लपेट कर ढकें।
चरण 5वां, N95 मास्क पहने। कप की तरह N95 मास्क को इसके पट्टों को सामने की तरफ रखते हुए इस प्रकार अपने हाथ में लें। मास्क को अपने चेहरे पर दबाएं और सबसे पहले निचले पट्टे को पीछे कान के नीचे पहने, फिर ऊपरी पट्टे को कानों के ऊपर पहने। सबसे जरूरी बात, ध्यान दें कि जोर से सांस छोड़ते समय मास्क के आसपास हवा का रिसाव कम से कम हो। फेस शील्ड अथवा आई गॉगल्स पहनना। ठीक से फिट करते हुए आई गॉगल्स पहने। अगर फेस शील्ड उपलब्ध है तो उसे हुड पहनने के बाद पहने। चरण 7वां, हुड को पहनकर चौड़ी पट्टियों को गले के पीछे की तरफ से इस प्रकार बांधें कि डॉफिंग के समय आसानी से खुल जाए। चरण 8, दस्तानों का दूसरा जोड़ा पहनना। अब दस्तानों का दूसरा जोड़ा पहने। इन्हें जितना ज्यादा हो सके खींचकर कलाई और बाहों को ढकें। चरण 9वां, पीपीई की फिटिंग जांचना। चारों तरफ घूमकर गाउन में आप कितने आराम से काम कर सकते हैं, जांच लें। अब आप कोविड क्षेत्र में जाने के लिए तैयार हैं।
डॉफिंग के चरण। डॉफिंग का या पीपीई उतारने का काम निर्धारित डॉफिंग क्षेत्र में ही पूरा करना चाहिए, जहां अलग अलग निजी सुरक्षा उपकरणों के लिए लेबल किए हुए रेड बायोमेडिकल वेस्ट बिन्स की व्यवस्था हो। 2 कुर्सियां होनी चाहिए जिन पर साफ तथा गंदा लिखा हो। ये प्लास्टिक या मेटल की बनी हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इन्हें आसानी से डिसइंफेक्ट किया जा सकता है। हर चरण बड़े ध्यान से और धीरे धीरे पूरे किए जाने चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार के एरोसोल की गुंजाइश न रहे। हर चरण के बाद हाथों को स्वच्छ करते रहना जरूरी है। चरण पहला, किसी ऑब्जर्वर, प्रेक्षक या सहकर्मी से पीपीई की जांच करा लें। किसी प्रेक्षक से पीपी में हवा के रिसाव या फटे होने की जांच करा लें। ध्यान रहे, पूरी डॉफिंग के दौरान प्रेक्षक आपकी पीपीई न स्पर्श करे। संपूर्ण रूप से कंटैमिनेशन की जांच करें। अगर कुछ गंदगी है तो अल्कोहल आधारित घोल से साफ कर लें। चरण दूसरा, बाहरी दस्ताने डिसइंफेक्ट करना। सबसे पहले अल्कोहल आधारित हैंड रब से दस्ताने डिसइंफेक्ट करें। यह किसी स्वचालित मशीन, अपने सहकर्मी की सहायता से या कंटैमिनेशन से बचाव के लिए अपनी कोहनी से इसके नोजल को दबाकर निकालें। चरण तीसरा, जूतों के खोल निकालना तथा नष्ट करना। अब पाँव को फैलाकर गंदी कुर्सी पर बैठ जाएं। पट्टे खोलकर जूतों के खोल को पहले ऊपर से नीचे सरकाएं, फिर पाँव के अंगूठे के पास से खींचकर निकालें। पाँवों को एक दूसरे पर ना रखें। जूतों के खोल रेड बिन में डाल दें। बाहरी दस्ताने को डिसइंफेक्ट कर निकालें। अब बाहरी दस्तानों को डिसइंफेक्ट करें। उंगलियों से दस्ताने के कलाई वाले हिस्से को रोल करते हुए उल्टा कर बाहर निकालें और फिर इसको गोल बनाकर दूसरे हाथ में पकड़ लें। दूसरे दस्ताने
को पहले हाथ के अंगूठे से उठाते हुए उल्टा करके बाहर निकालें और हाथ में पकड़े दस्ताने के चारों तरफ लपेट लें। इस तरह दोनों दस्तानों का एक थैला जैसा बन जाएगा। इन्हें रेड बिन में फेंक दें। चरण 5वां, अब अंदर वाले दस्तानों को डिसइंफेक्ट करें। चरण छेवां, हुड निकालने के लिए अपनी गर्दन के पीछे से गांठ खोलें। फिर बिन की तरफ झुकें और हुड को ऊपर से खींचकर उसमें डाल दें। चरण 7वां, अंदर वाले दस्ताने फिर से डिसइंफेक्ट करें। चरण 8वां, ओटी टॉवल तथा गाउन निकालना। अब डिस्पोजेबल ओटी टॉवल को अपने गले के चारों तरफ से धीरे धीरे रोल करते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ ध्यान से निकालें। और बिन में डाल दें। अंदर वाले दस्ताने फिर से डिसइंफेक्ट करें। अब गाउन को गले और पीछे से खोलें। पट्टियों को ध्यान से खोलें। गाउन को कंधे के पास से उतारें जिससे वह कंधे से सरक जाए।
बाहों से गाउन को अंदर से बाहर की तरफ रोल करते हुए सामने से ध्यान से खींचें। इसे इस प्रकार मोड़ लें कि गंदगी वाला हिस्सा अंदर की तरफ हो। अब इसे बिन में डाल दें। चरण 9वां, अंदर वाले दस्ताने डिसइंफेक्ट करें। अंदर वाले दस्ताने फिर से डिसइंफेक्ट करें। चरण 10वां, आई गॉगल्स फेस शील्ड डिसइंफेक्ट कर नष्ट करें। सबसे पहले बिन की तरफ झुकें, फिर पीछे की तरफ से गॉगल्स निकालकर उसमें डाल दें। गॉगल्स के सामने के हिस्से को स्पर्श ना करें। चरण 11वां, अंदर वाले दस्ताने फिर से डिसइंफेक्ट करें। चरण 12वां, अंदर वाले दस्ताने निकालें, हाथ स्वच्छ करें तथा नए दस्ताने पहने। अंदर वाले दस्ताने पहले बताए तरीके से सावधानी से निकालें और बिन में डालें। फिर पहले बताए तरीके से हाथों को स्वच्छ करें।
purpose of this webinar is to brush up our knowledge related to infection control and prevention with regard to management of COVID-19 patients. Today I am proposing to follow this outline. We'll be talking about coronavirus, the risk of COVID-19 among healthcare professionals, transmission of COVID-19 among healthcare personnel, protecting healthcare professionals from COVID-19 using standard precautions, respiratory and contact precautions. In case of accidental exposure, what is to be done by the healthcare professional, patient assessment and placement, and how to ensure that patient is isolated and barrier nursing is provided. In case if healthcare professional has a contact with the positive patient, then whom to contact for the services. And finally, I'll conclude with some take-home message. To start with, coronavirus belongs to a family of viruses that causes illness ranging from common cold to more severe diseases. A novel coronavirus, it's a new strain that has not been previously identified in human beings. There has been human-to-human transmission. Now the question arises, are healthcare professionals at risk? Yes, healthcare professionals can be at risk. They can be at risk of acquiring the infection through respiratory route and direct contact with infectious patients. How does COVID-19 spread? It is from human to human, from person to person via respiratory droplet infection. That is the primary mode of transmission, followed by close contact. And this close contact can occur while caring for a patient, including being within approximately 6 feet, that is 2 meters of a patient within COVID-19 for a prolonged period of time, having direct contact with infectious secretions such as sputum, serum, blood, and respiratory droplets of a patient with COVID-19. If close contact occurs while not wearing all the recommended personal protective equipment. Again, a very big question is there in front of us, how to protect ourselves as healthcare professionals. How can we protect ourselves from COVID-19? We have to follow the standard recommendations, which includes standard precautions, respiratory precautions, and contact precautions, so as to prevent infection spread from patients to the healthcare personnel. Let's see what the standard precautions are. We all are familiar with the standard precautions. These are the set of interventions carried out by healthcare professionals while taking care of infected patient. Healthcare workers caring for patients under investigations or confirmed cases should implement standard infection control precautions, which include observing basic hygiene, use of personal protective equipment, respiratory etiquettes, maintaining environmental cleaning and disinfection, biomedical waste management, and finally, safe handling of dead bodies. So let us see one by one. So we start with hand hygiene. We all know that hand hygiene is one of the most simplest and cost-effective method of controlling the spread of infection. Hand hygiene can be performed using soap and water or alcohol-based hand rub. We should perform hand hygiene with alcohol-based hand rub or soap and water before and after all patients' contact with potentially infectious material, and before putting on and upon removal of personal protective equipment, including gloves. Remember, whenever our hands are visibly soiled, we need to wash with soap and water, not with the alcohol rub. So hand hygiene should be performed immediately after contact with the respiratory secretions and as and when you feel that you have touched the patient
or the patient's belongings, which act as fomites. The second important component of standard precautions is referring to the use of personal protective equipment. Healthcare workers, they are involved in direct patient care. They should make use of the following PPE, that is, the gowns, gloves, medical mask, eye protection, including goggles or face shield. Selection of personal protective equipment should be done very carefully, considering the nature of activities we are involved in. For example, we are performing aerosolized procedures where the aerosols are likely to get generated. For example, endotracheal suctioning, while giving bag and mask ventilation, while providing non-invasive ventilation, or during bronchoscopy when we are assisting. As nurses, when we are assisting for bronchoscopic procedures, there we have to make use of the personal protective equipment, and then we have to also perform hand hygiene before putting on and after taking off PPE. Discard PPE in appropriate waste container after use. So use of personal protective equipment is decided depending upon whether you are involved in direct patient care or you are there as an ancillary staff, what type of procedure you are doing, which type of setting you are working in. For example, if you are working in the emergency department, ICU or ward, there you have to make use of particulate respirator like N95. While in screening areas or in the OPD, one can still manage with the 3-layer surgical mask. There are number of steps involved while donning and doffing the personal protective equipment. So there are 9 steps involved in wearing the personal protective equipment, while 19 steps are involved in removal of personal protective equipment. So one has to be very, very careful while donning as well as doffing the PPE. In between, hand hygiene is recommended between the 2 steps, like when you are removing your mask and between removal of goggles or gowns or gloves, it is recommended to maintain the hand hygiene. Use of double gloves is recommended when you are in contact with COVID-19 patients. Then there are transmission-based precautions to be observed. They are mainly of 2 types, respiratory precautions and contact precautions. Respiratory precautions, let us discuss in detail how we can ensure the respiratory precautions. Wear a medical mask while entering a room where the patient suspected or confirmed of being infected with Corona-19 are admitted. Use a particulate respirator like N95, gloves and gowns, aprons when performing aerosolized generating procedures such as tracheal intubation, non-invasive ventilation, tracheostomy, cardiopulmonary resuscitation, manual ventilation before intubation, and while assisting for bronchoscopy. Environmental cleaning and disinfection is considered to be an integral part of the standard precautions. We have to emphasize on routine cleaning and disinfection procedures as appropriate in the healthcare settings. Only the intensity and frequency is to be increased. In the areas like laundry, food services, we have to manage the laundry, food services and utensil in accordance with routine procedures. In environmental cleaning, the person whosoever is involved in the process of environment cleaning should ensure that personal protective equipments are on. Cleaning agents and disinfectants like 1% sodium hypochlorite solution can be prepared. Usually we have 5% sodium hypochlorite solution available. This can be reduced to the strength of 1% by diluting 200 ml of sodium hypochlorite with 800 ml of water. The solution should be prepared fresh. If you are using a long-standing solution, it is likely to lose its potency. So ensure that the solution
which is prepared for the cleaning purposes, freshly prepared, and it should be covered. Otherwise, there would be escape of chlorine gas and therefore making the sodium hypochlorite solution ineffective. Leave the solution for a contact time of at least 10 minutes. There are certain surfaces where the use of bleaching powder or the bleaching agent is not recommended, such as metals. So in those surface areas, alcohol, that is either isopropyl alcohol 70% or ethyl alcohol 70% can be used to wipe down the surfaces. There are some cleaning guidelines. First of all, we have to ensure that the area where the cleaning is going to take place is sealed off. So seal off the areas where the confirmed case has visited before carrying out cleaning and disinfection. Mopping the floor with routinely available deodorizing agents like phenyl or 1% hypochlorite disinfectant solution can be used. Wipe down all accessible surfaces of wall as well as the blinds with bleach solution. Discard cleaning items into biohazard bags. Disinfect buckets. The buckets which were used for the cleaning purpose should be disinfected by soaking in 1% hypochlorite or bleach solution. Dispose of the waste generated as a result of cleaning into biohazard bags. Cleaning staff should be attired in suitable personal protective equipment. This is something very essential and mandatory. Regarding decontamination and biomedical waste management, disinfect any surface or material known to be or potentially be contaminated. We have to identify and segregate contaminated material before decontamination. And or disposal as biomedical waste guidelines. Where contamination has occurred but the process of decontamination is not possible, like the laboratory, we need to package the contaminated waste for transfer to another facility with decontamination capacity. So while decontaminating the equipments and the waste and the biomedical waste generated as a result of patient care, one has to ensure that heavy-duty gloves are put on, along with disposable long-sleeved gown, eye goggles, or a face shield and a medical mask. Now coming to contact precautions.
The contact transmission between an infected or colonized person and a susceptible host can be through direct contact. Either it is body to body surface or it can be indirect through fomites. So all the patient's belongings, the patient care items present in the patient care unit they can act as fomites. Contact precautions can be observed by ensuring frequent hand hygiene, making use of personal protective equipments, and decontaminating the items more frequently. Here I would like to say that there are two types of surfaces available, low touch areas and the high touch areas. High touch areas are required to be cleaned more frequently. Again, we have clinical areas and non-clinical areas. So in clinical areas, maybe every 1 to 2 hourly, the high touch areas like the door handle, the switches, buttons, knobs of the monitor, they can be cleaned more frequently, like 1 to 2 hours. While in non-clinical areas like the laboratory, the frequency of cleaning can be every 3 to 4 hours. Finally, handling the dead bodies. When handling of dead bodies is concerned, we have to avoid direct contact with blood or body fluids from the dead body. Put on personal protective equipment. Make sure that if healthcare professional has any wounds, cuts or abrasions, they are covered with waterproof bandage or dressings. We are not supposed to be eating, drinking or smoking near the dead body. Do not touch your eyes, mouth or nose. Observe strict personal and hand hygiene. Avoid sharp injuries which can occur during the course of examination of dead body and decontamination. Remove personal protective equipment after handling of the dead body. Wash hands with liquid soap and water immediately. In case of accidental exposure to blood and body fluids, for example, it's a percutaneous injury or a mucocutaneous exposure, one has to wash the site thoroughly with soap and water. For example, if the splash is in the eye, then we need to wash the site with copious amount of water. If it is percutaneous type of injury, there we need to thoroughly wash it with soap and water. All such incidents of percutaneous or mucocutaneous exposures are to be reported and we have to immediately seek the medical advice. When we have a patient coming to us in the triage area or in the ward or ICU, how we are going to assess a patient for COVID-19? First of all, we have to take history and identify if in the past 14 days since the first onset of symptoms, a history of either travel to epidemic area or close contact with a person known to have COVID-19 illness, and the person has fever or symptoms of lower respiratory illness such as cough, shortness of breath. Along with this, person can have cough, dryness of oral cavity leading to progressive cough, fatigue, malaise, and later on some kind of GI symptoms such as vomiting and diarrhea can also be noticed. So if both exposure and illness are present and confirmed by the laboratory test, we need to isolate the patient. These patients should have the face mask on them. Isolate the patient in a private or a separate room. Wear appropriate personal protective equipment while providing care to these patients.
continue to assess their clinical status, and provide appropriate treatment. Assess and triage patients with acute respiratory symptoms and risk factors for COVID-19 so as to minimize the chances of exposure. So the patients who are reporting with acute respiratory symptoms or some risk factors, they are to be immediately triaged and they should be placed in an isolated area. Make them put on the face mask and place them in the examination room with a closed door in an airborne infection isolation room if available. Now we move on to the nursing care. While providing nursing care to these patients, we have to observe barrier nursing. Barrier nursing is a special kind of nursing provided to the patient so as to protect the healthcare professionals from acquiring the infection with which patient has got admitted and further preventing the spread of infection from one person to another person. The patient under investigation or a confirmed case has to be admitted in an isolation room with negative pressure and at least 6 to 10 air exchanges should take place per hour. Only the essential personnel should enter the room. We need to restrict the entry of all the healthcare professionals present in the ward or ICU. Only few dedicated personnel should be allowed to enter the room. Make use of dedicated or disposable non-critical patient care equipment such as thermometers, blood pressure cuffs, saturation monitoring probes, etc. If the equipment is to be used for more than one patient, clean and disinfect such equipment before use on another patient according to the manufacturer's instructions. Healthcare personnel, while entering the room or soon after a person or a patient when vacates the room should continue to use respiratory protection. So the healthcare personnel entering the room soon after a patient vacates the room should use respiratory protection. Few words about the safety of healthcare professionals. Many times it can happen the personal protective equipment loses its integrity. It's torn or it is not properly used by the healthcare professionals. In such situations, we have to seek the medical help. When to contact the occupational health services? We have to contact the occupational health services in case of unprotected exposure, that is, not wearing or inappropriately using the recommended PPE. To a confirmed or a possible COVID-19 patient, contact supervisor or occupational health services immediately. So whenever there is a history of unprotected exposure by any healthcare personnel, the person has to contact the supervisor or the occupational health services immediately. If one develops symptoms consistent with COVID-19 such as fever, cough or difficulty in breathing, don't report to work and should contact the occupational health services.
So finally, there is a take-home message for the healthcare professionals. The nurses and the doctors, they are the frontline soldiers to fight a battle against COVID-19. We have to ensure that the protective measures are used. Take protective measures in workplace. Learn properly how to use the PPE. Donning of PPE as well as doffing of PPE is essential so as to protect oneself from getting sick. Encourage all the members of healthcare team to take protective measures. This is a time to remain calm and composed and encourage all the healthcare team members to observe the personal protective measures, the safety measures, the standard measures, universal precautions, and transmission-based precautions. So with this, I conclude this webinar. This is the list of references from which So, Dr. Poonam Joshi will answer your questions regarding infection control practices. Thank you, Dr. Sandhya Gupta. The questions which have been raised while watching the webinar are very pertinent, and I'm very happy to answer them. Let's start with the questions. The first question was, why should we wash our hands while being at home? So this is the first question. One of our audience, they have asked this question. Here I would like to say that along with social distancing, the hand washing is also important in containing and curtailing the infection. We all know that we are touching fomites, whether we are working in the patient care area or we are at home. We are coming in contact with many people in our day-to-day interaction. So these are the two ways by which we can minimize the spread of infection. So please encourage in your family as well as in your workplace to wash your hands more frequently. And this was discussed in detail, how frequently we have to wash, when we have to wash. Remember the 5 movements of hand hygiene, which we have been practicing, but now in view of the COVID-19 infection, we have to ensure that we continue to comply with the hand hygiene practices. One question was related to the role of hydroxychloroquine in management of COVID-19. Here I would like to say that so far there is no treatment available. Whatever treatment is provided is purely symptomatic and supportive. So we should not take hydroxychloroquine tablet on our own. The best thing would be to seek the medical advice. Whenever you feel that while taking care of patient, you have developed some symptoms, please seek the support from the healthcare services which are available for the healthcare professionals, and whatever they advise, just follow them. It is always good to quarantine yourself in case of presence of symptoms. Another question was related to the use of mask. How long safely we can make use of one mask? Here I would like to say that masks can be comfortably worn for 3 to 4 hours till the time you do not feel it becoming moist. Or whenever you feel your mask has got spoiled or soiled due to some aerosolized generating procedures, that time you can change your mask more frequently. In the healthcare setting, when we are working in the ward or in the ICU, ensure that you have N95 mask
for your use, because this is the one which is considered to be the best. While in the screening area, one can still continue with the 3-layer mask, the ordinary surgical mask which is available, but in the ward, in the emergency and in the ICU, one cannot work without having N95 mask. Remember, you can change it every 3 to 4 hours or whenever you find it becoming moist. Another question was related to the use of hand hygiene. Hand hygiene is maintained using soap and water as well as using the alcohol rubs available in the patient care areas. All the alcohol rubs contain around 68 to 70% of isopropyl alcohol in it. Therefore, they are considered to be the best in killing the coronavirus. Another question was related to the virus. How long does it remain alive in the air? So this question has been already answered by my colleague Dr. Kamlesh Sharma. The virus can be alive in the air maybe for a period of 3 hours, while on fomites you will find like cardboard boxes for 24 hours, on metal and plastic shiny objects it may last for 42 to 72 hours. So please do take the precautions and get them periodically cleaned in your ICU, either using hypochlorite solution or with isopropyl alcohol. Use of hypochlorite solution on metal surfaces is not appropriate, but definitely on plastic and on tabletops, hypochlorite is the best way to take care of coronavirus. How to disinfect phone? This was another question raised by one of the audience. So the phone, since it is a plastic body, can be safely treated with 1% hypochlorite solution. Allow the solution to come in contact with the fomite, any fomite, not only the phone, any fomite with which you are coming in contact with. Allow it to be in touch with hypochlorite solution. You have to literally wipe the surface with wet mop containing hypochlorite solution and allow the contact to be there for 10 minutes. Allow it to dry on its own. That will take care of the coronavirus. Early diagnosis is possible. This was the question it was a suggestion as well as a question. How early diagnosis is possible? So any person who is suspected to have any of the disease symptoms which were narrated by Dr. Kamlesh Sharma, that type of person can report to the healthcare facility and get herself or himself investigated. Usually the pharyngeal and the nasal swabs are taken to confirm the diagnosis. The contacts are also subjected to this kind of test. One more question was related to the extra essential precautions used for COVID-19. Yes, we do have to take extra precautions while working in the ICU, in the ward, as well as in emergency. Maybe the concept of double gloves is very true as far as coronavirus or COVID-19 is concerned. But if you are working in the screening area, the double use of gloves is not at all recommended. So your decision regarding the use of PPE depends upon the site where you are working, whether it is a ward or an ICU or an OPD, the type of nursing activity you are involved in, and the type of contact with you have with the patient, whether you are the healthcare person like doctor or a nurse, or you are an ancillary staff. Ancillary staff, since they are not coming in direct contact with the patient, they can continue with the ordinary triple layer mask, while the healthcare persons, the technical staff, doctors and nurses, they should only be using N95 mask. So finally, I would like to say prevention is the only way to control the infection. Please learn how to make use of PPE. This is little different what we were doing routinely in our day-to-day patient care activities, because COVID-19 is a very fatal disease and is likely to be very fatal, approximately having a mortality of around
3 to 5%. So one has to be very, very careful. I hope you have learned a lot from the videos which you watched during this webinar. And now finally, I would like to conclude that as healthcare professionals, our duty is also to educate the public. So please encourage all the healthcare professionals as well as your family members to continue washing their hands more frequently and maintaining the social distance. If we all work together, we'll be definitely able to fight against this war. Thank you.